L'ami. Répétez après moi. L'ami. L'ami virtuel. L'ami. Virtuel. D'accord? The virtual friends. Okay? So répétez après moi. C'est une. Répétez après moi. C'est une. This is a. C'est une personne. Remember one thing, my team. Person is always female in French. Person. Person. Person is always female in French. Okay? C'est une personne. C'est une personne qui est, which is, qui est dans nos contacts. Répétez après moi. C'est une personne. Repeat after me, because now this is your reading skills, your learning skills. Votre l'apprentissage de votre langue. Language learning concept. C'est une personne. Repeat after me. This is a person. Qui est, which is dans nos contacts, which is in inner contact. Okay, tell me what is l'ami virtuel. Par exemple, vous avez, for example, you have le réseau social, see the social website, Facebook, Instagram, Twitter. In this case, you have your contacts of the friends, but these are all virtual friends. Is it clear to you? Tell me. Yeah. So, c'est une personne. This is a person. Qui est, which is, qui. Qui is my which. Qui. Qui est. C'est une personne. C'est une personne. Which is. Qui. Qui is my which. Qui. Qui est dans nos contacts. It means which is in our contacts. Obviously, évidemment, now répétez après moi. C'est une personne. Répétez après moi. C'est une personne. C'est une personne qui est dans nos contacts. dans nos contacts. Is it clear to you? Yes. I'm saying l'ami virtuel, c'est une personne qui est dans nos contacts. Is it clear to you? Yeah. Okay, now repeat it please then. Repeat it. This is a person which is in our contacts. Repeat it please. C'est une personne qui est dans nos contacts. Yes, contact. Contact is something like contact. Now, don't. Don't is we have in. In, yes. We have in. Is it clear? Dans la sac. Okay. Yeah. Now, c'est une personne qui est dans nos contacts. Is it clear to you? Yeah. Quelqu'un, répétez après moi. Quelqu'un. Que. Very important. Yes, quelqu'un que on ne connaît pas, on qu'on ne connaît pas. I will explain to you what is this. I will explain to you. Connaît pas. Now, forcément, I will explain to you what is this. The first word we have is connaître. Répétez après moi. Connaître. Connaître is my verb to know. Connaître. Répétez après moi. Connaître. This is my verb. Connaître. Connaître is my verb to know. Connaître. Is it clear to you? Yeah. To know. Yes, connaître. So the moment I will conjugate the verb of connaître, okay, like let's see how it works. So connaître, je connais. Repeat after me. Je connais is to I know. I know. We have verb connaître. Is it clear to you? Connaître. Yeah. Okay. So basically, let me write it down. So we have verb. Je connais. Répétez après moi. Je connais, tu connais. Let me write it down, okay? Je connais, tu connais, il connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils, elles connaissent.
So basically, this is my verb to connaître. Connaître is my verb to know. This is, you have to understand. Is it clear to you? Yeah. Okay. So over here, I'm saying quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. Quelqu'un qu'on. Very important, mademoiselle. I will explain to you how you can increase your level now. Say, is it clear to you? See, quelqu'un is someone. Quelqu'un is Someone. someone. Quelqu'un. Write it down. Someone we do not know very well. Obviously, say l'ami virtuel. Quelqu'un qu'on. Someone on ne connaît pas. Someone that. Quelqu'un. Someone que. Que is that. On ne connaît pas. One do not know. Forcément. Forcément. One do not know very well. Dont la vraie vie, dans la vraie vie, mais qui partage, qui partage, mais qui partage des choses, mais qui partage des choses avec nous. What is this now? I'm saying quelqu'un is someone qu'on ne connaît pas. That con is ka, right? That I'm saying because we have two vowels together. Someone that. Someone that. Okay, that we have two vowels. On ne connaît pas. On, the individual we are talking about, individual. On ne connaît pas. We do not know. Forcément, dans la vraie vie. As in real life, we are not very well aware of this friend. But, qui partage, which share the things with you, but still he which share the things. Forcément is real life? No. Forcément is when you do not know very well. Forcément. Is it clear to you? Forcefully, I would say. It's something, this phrase basically, when we do not know the person very well in the real life. Dans la vraie vie. Vrai is real. Dans la vraie vie. Vie is my life. Dans la vrai is real. Vie is my life. I'm saying quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément dans la vraie vie, mais qui partage des choses avec nous. So, mademoiselle, this is how you will increase your level. Si vous voulez augmenter votre niveau de français, vous devez ajouter ce type de phrase, vous devez améliorer votre l'esprit et votre l'espoir. Comment? How you can increase, you formulate your ideas. Répétez après moi, c'est une personne qui est dans nos contacts, quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément dans la vraie vie, qui partage des choses avec nous. इसको repeat करो आप एक बार and समझो क्या कह रही है. Repeat it please. Quelqu'un qu'on ne... Quelqu'un, okay, quelqu'un is someone. That, quelqu'un, qu'on, that one, ne connaît pas forcément, that we do not know very well. Dans la vraie vie, in the real life, but, qui partage des choses avec nous. But they share, partager. Mademoiselle, partager is my verb to share. Partager, is it clear to you? Yeah. Partager is my verb to share. Partage, they shows the things with us, avec nous. Tell me, Yasin, is it clear to you? Yeah. Is it clear? Jiza, tell me, is it clear to you? Yes. So, isko repeat karo, because you know what, why we are doing these type of things, because these are very important terms in terms of your reading things, and you will get, you will, when you speak the language, quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément dans la vraie vie, mais qui partage des choses avec nous. So you'll come to know the concept, right? Claire? Okay, so एक बार repeat करो please इसको. C'est une personne. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, Okay.
Quelqu'un connaît pas. On ne connaît pas. But we do not know very well. Forcément dans la vraie vie, mais qui partage des choses avec nous. Is it clear? Avec nous. Ok. Clear, mademoiselle? Ouais. इसको एक बार repeat करो ना. What I would say. Navjot, repeat it please. C'est une personne. Repeat it. C'est une personne qui est dans nos contacts. Quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément dans la vraie vie, mais qui partage des choses avec nous. Vous comprenez what he was trying to say? Yes, why? J'ai compris. No. Then we have Ilya Ossi. Ilya Ossi. Ilya Ossi. Repeat after me. Ilya Ossi. Ilya Ossi. Ilya Ossi. There are also. Ilya Ossi. Ilya Ossi. There are also. Now, for example, c'est le copain. Repeat after me. C'est le copain. C'est le copain ou la copine que j'appelle. Répétez après moi. Ou la copine que j'appelle. Ou la copine que j'appelle con. I will explain to you. Con. J'ai envie de sortir. J'ai envie de sortir. Mais à qui je ne raconte pas des choses personnelles. Je ne raconte pas de choses personnelles. Is it clear? You know what is this? Very important. C'est le copain. Very important. Very important. C'est le copain. Copain is your boyfriend. This is the boyfriend. Ou la copine. Copine is your girlfriend. Is it clear to you? Yeah. Copain is your boyfriend and copine is your girlfriend. C'est le copain ou la copine. C'est clair. Right. Is it clear to you, mademoiselle? Yes, sir. Why? This is the boyfriend or the girlfriend. I call, que j'appelle, that I call. Quand, when, j'ai envie क्या होता है? I have wish. J'ai envie. Whenever you say I want this thing, you say j'ai envie. We have a vouloir also, je veux. We have a sense of the language. J'ai envie. When I wish the sortir to go out. When I want, j'ai envie. When I want to go out. So this is a phrase I can say je veux, but j'ai envie is a very beautiful term. J'ai envie is a very beautiful term. I wish, I want, j'ai envie. इसको करो language को because j'ai envie. J'ai envie is I wish, I want. I'm saying il y a aussi, there also. C'est le copain. This is the copain, the boyfriend. Ou la copine or the girlfriend that I call, que j'appelle. Quand, when j'ai envie de sortir. When I have a wish to go out. Mais, but, à qui je ne raconte pas. À qui, répétez après moi. To whom, à qui. À qui, whom, to whom. To whom, je ne raconte pas. To whom, I do not tell, raconte.
So we have verb raconter is to tell. Je ne raconte pas. I do not tell the things personally. Des choses personnelles. Is it clear to you? Ouais. So what I'm saying is, c'est le copain ou la copine. This is the copain, boyfriend, ou la copine, the girlfriend, that I call, que Ouais. j'appelle, que j'ai envie de sortir. When J'ai envie de I sortir. wish to go out. Que quand j'ai envie de sortir, mais, but, à qui je ne raconte pas. To whom I do not tell. Je ne raconte pas. Is it clear to you? À qui, to whom? À qui. À qui is to whom? À qui. Répétez après moi. À qui. To whom? À qui. À qui. So, mademoiselle, these are the questionnaires. À qui. It will help you out. Je ne raconte pas. I do not tell. They show special. To whom I do not tell the things personally. So, répétez après moi. C'est le copain ou la copine que j'appelle. C'est le copain ou la copine que j'appelle quand j'ai envie de sortir, mais qui je ne raconte pas des choses personnelles. Is it clear to you? अब इसको आप पूरा रिपीट करो यहाँ से. L'ami virtuel, c'est une personne qui est dans nos contacts, quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément dans la vraie vie, mais qui partage des choses avec nous. Il y a aussi, c'est le copain ou la copine que j'appelle quand j'ai envie de sortir, mais à qui je ne raconte pas des choses personnelles. Repeat it, please. L'ami virtuel. C'est une personne qui est dans nos contacts. Pas forcément dans la vraie vie, mais qui partage des choses avec nous. Il y a aussi, c'est la copine ou la copine que j'appelle quand j'ai envie de sortir, mais à qui je ne raconte pas des choses personnelles. Is it clear to you? Clear? Yes. Manish, bonjour. Vous allez bien, Manish? Bonjour, très bien. Merci. मनीष आई थिंक थोड़ा आप लेट हो गए. यू गॉट लेट. हम एक टॉपिक कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. इसका जो आपका जो रेस्ट पेंडिंग है ना, उसका वीडियो में देखना आप एक बार ना. द मोर आई विल शेयर द वीडियो, राइट. जो नहीं समझ आएगा प्लीज आस्क टू मी. नाउ वी हैव tu oubli. Répétez après moi. Tu oubli. Répétez après. Tu oubli. Basically, mademoiselle, we have verb oublier. Oublier is my verb to forget. Oublier. Oublier is my verb to forget. Oublier. Oublier. C'est clair. Oublier. So I'm saying tu oublies le ou la meilleure amie ou la meilleure amie ou la meilleure amie ou la meilleure. You forget. Tu oublies le ou la meilleure. Meilleure is the best. Meilleure. Meilleure we have best. Is it clear to you? You forget the best friend. La ou la. La is used for the male. La is used for female. Is it clear to you? La ou la, male or the female. Meilleure amie, the best friend. Is it clear to you? Yeah. Yes, sir. La meilleure amie, you forget the best friend. Meilleure amie, meilleure the best. Tu oublies la meilleure amie, c'est quelqu'un. Répétez après moi. C'est quelqu'un qui connaît. C'est quelqu'un qui connaît tout de notre vie. Qui connaît tout de notre vie. Because these very important things is going on. This is someone which know, qui connaît.
which no connaît. Have we done connaître verb, right? Connaître. Abhi kiya na connaître verb. Is it clear to you? Navjot, Ziza, Manish? Yes, Yeah. sir. Yes. Quelqu'un, this someone qui connaît, which know, to the notary. To is all of your life. This someone who know everything about your life. Tu oublies la meilleure amie, you forget the best friend. C'est quelqu'un, this someone qui connaît to the notary. Is it clear to you? Which know all of your life. Is it clear to you? Tell me yes and no. Yes, sir. Claire? Oui, clair. Nous accepte qui nous accepte comme qui nous accepte comme on est. I will explain to you. Comme on est. What is this? C'est quelqu'un, this someone qui connaît the to the notary. Is it clear to you what I say? I'm saying, mademoiselle, this is someone, he's someone who know everything about your life, who accept us as we are. I'm saying, c'est quelqu'un qui connaît to the notary. Qui connaît to the notary. This someone which know everything about your life, qui nous accept, which accept us like we are. Comme, like comme as we are. Comme on est. Is it clear to you? Tell me yes or no. Oui. Tu oublies le meilleur ou la meilleure amie. C'est quelqu'un, someone which know, qui connaît to the notary all of your life, qui nous accepte comme on est, which we accept like we are, comme on est. Is it clear to you? Yes, sir. Okay. Is it com? Com is like. Which, like on est, ESTR. C'est clair? C'est la personne à qui, répétez après moi. C'est la personne. C'est la personne. C'est la personne to whom, à qui. C'est la personne à qui on dit tout et à qui on peut tout demander. On peut tout demander. Now what is this? I'm saying, c'est la personne à qui. This is a person to whom. C'est la personne à qui. It is a person to whom we say everything. We say everything. On dit tout. We say tout, all. C'est la personne, the person. This is the person. C'est la personne. This is a person. À qui? To whom? On dit tout. We say everything. Is it clear to you? And to whom? Et à qui? And to whom? À qui? And. Et à qui? On peut. On peut tout demander. We can ask everything. Is it clear to you? So répétez après moi. C'est la personne. बोलो आप. C'est la personne. C'est la personne. The person à qui. À qui इसको note down करो आप. Pen down. À qui, to whom. À qui is to whom. To whom. À qui. À qui. Very important. À qui. To whom. À qui. To whom. Very important. I'm saying c'est la personne à qui. This is the person to whom. On dit tout. We tell everything. On dit tout. Et à qui and to whom. Et à qui on peut tout demander. We can ask everything. On peut tout demander. On dit tout. रैपते आप ये बोलो आप लैंग्वेज को, बिकॉज यहीं पे आपका लैंग्वेज का फ्लो बनेगा. On dit tout. रैपते आप. On dit tout. On dit tout. On peut tout demander. On peut tout demander. We say everything. On peut tout demander. We can ask everything.
So répétez après moi. Tu oublies la meilleure amie, c'est quelqu'un qui connaît tout de notre vie. Tu oublies la meilleure amie. La meilleure ou la meilleure amie. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Someone qui connaît everything of your life to the notary. The notary qui nous accepte comme on est, qui nous accepte, he accepts us. Qui nous accepte comme on He or she est. accepts us comme on est, like we are. C'est la personne à qui, this is a person to whom on dit tout, which we tell everything. C'est à qui and to whom on peut tout demander, we can ask everything. इसको बोलो आप रिपीट करो. C'est la personne à qui on dit tout. यहाँ से करो. Tu oublies. यहाँ से रिपीट करो. Tu oublies. Tu oublies. Les ou la meilleure. Tu oublies la meilleure ou la meilleure amie. Ami, c'est quelqu'un. Qui connaît notre vie. Qui nous accepte. Qui nous accepte Comme on est. C'est la personne à qui on dit tout et la que on peut demander. Is it clear to you now? Par exemple, répétez après moi. D'autres idées. D'autres idées. The other ideas. D'autres idées. Other ideas. L'ami collègue. Répétez après moi. L'ami collègue. L'ami collègue, Claire. L'ami confident. L'ami collègue, l'ami confident. L'ami distant. L'ami distant. Claire. L'ami toxique. L'ami toxique. Claire. L'ami que vous aimiez bien. Répétez après moi. L'ami que vous aimiez bien. Aimez bien, I can say. Okay, l'ami que vous, I can say aimez bien. I can say aimez, yes. Que vous aimez bien, I can say. Que vous aimez bien. Mais qui pose, I will explain to you, qui pose toujours problem. Now what is this? L'ami collègue, répétez après moi. L'ami confident, repeat after me please. L'ami confident. Your colleague, friend, l'ami collègue, you know your colleague, friend, l'ami collègue. Oh shit. L'ami collègue. 1 second. L'ami collègue, your colleague, friend. Is it clear to you? Clear? Confident friend, the l'ami confident, the friend you're very much confident. L'ami confident, confident friend. Is it clear to you? L'ami distant, distance wala friend. Claire. L'ami toxic, toxical friend who's always create a problem for you. So we have 4 types. Il y a 4 types d'amis. L'ami collègue, répétez après moi. L'ami collègue, l'ami collègue, l'ami confident, l'ami distant, l'ami toxic. Is it clear to you? L'ami toxic. L'ami collègue, l'ami confident. So l'ami friend, l'ami toxic. L'ami que vous aimez, the friend you like, bien, well, mais, but, qui pose toujours a problem, who always create a problem for you. That's a l'ami toxic. Who always pause, basically pauses my verb to ask.
Okay, it's my verb to ask. Is it clear to you? But over here I'm saying l'ami que vous aimez bien, the friend you like best. But the one friend you like more, que vous aimez bien, mais qui pose toujours le problème, which always create a problem for you. Is it clear to you? Toujours pose toujours problem. Always. Is it clear to you? Yes. And so these are the types, say with the teeth, because you know what? These type of senses may you will speak and you have to create your ideas in friendship. I will give you a topic which you have to write it down. You have to write, you have to give with the way ajouter, with the way partager, what's the point of view. C'est clair, and I will explain to you how. C'est quoi? Répétez après moi. C'est quoi? C'est quoi? Cet article. Cet article. Cet article. Les amis. Répétez après moi. Les amis. Les amis, clair. C'est pas comme des chaussures, very important. C'est pas comme des chaussures. Chaussures. What I'm saying. C'est quoi cet article? Répétez après moi. बोलो इसको आप. C'est quoi cet article? C'est quoi cet article? What is this article? L'ami, the friends. C'est pas comme. C'est pas. This is not like. C'est pas comme. वो कह रहे हैं c'est quoi cet article? This is what for this article? Say what is this article? C'est quoi cet article? Répétez après moi. C'est quoi cet article? C'est quoi cet article? What is this article? Les amis, the friends. Les amis. C'est pas comme des chaussures. बोलो. C'est pas comme des chaussures. C'est pas comme des chaussures. आप बोल रहे हो कि this is lami is not like a shoes कि हम change करके पहनते रहें. Is it clear to you? Tell me yes or no. Chaussure is a shoes. I'm saying cet article. C'est quoi cet article? This is what for this article. Lami, 1 second. Sorry. C'est quoi cet article? The article. This is what for this article. C'est quoi? What is this article? C'est quoi cet article? What is this article? Les amis, the friends. C'est pas. This is not comme like the shoes. Like this is not like a shoes wherein we can change the shoes every time, you know. So pas comme the chaussures. C'est clair. Is it clear to you? Yes, sir. Now we have only class. Only class. Only class. Only class pas. Only class pas. Donde categorie. Donde categorie. Categorie. Only class. Only class pas. Donde categorie. Categorie. L'amitié. I will explain to you. L'amitié, c'est un lien. Répétez après moi. C'est un lien qui est souvent plus dur, qui est souvent plus durable. Durable, c'est clair. Durable que l'amour est. Okay, first I will explain this. What is this? C'est quoi cet article? Répétez après moi. C'est quoi cet article? C'est quoi cet article? Les amis. Les amis. C'est pas comme des chaussures. C'est pas comme des chaussures. They're not like a shoes. Is it clear to you? Clear? On les classe pas dans les catégories. We cannot classify the categories. Okay, what is this? We do not classify. On les classe pas. On les classe pas.
with pas. Pas is your not. Pas. Pas. On ne classe pas dans des catégories. It means I'm saying we cannot classify the categories. On ne classe pas dans des catégories. On ne classe pas dans des catégories. We do not classify the categories. Is it clear to you? Tell me yes or no. Yes. Why? L'amitié, c'est un lien. This is a bond. C'est un lien. This is a bond. Bolo, the friendship. L'amitié, the friendship. L'amitié is your friendship. I'm saying l'amitié, the friendship. C'est un lien. This is a bond. Qui est souvent, which is often. This is a bond which is often plus durable, which is this is a bond which is more durable, and l'amour, which is more lasting than love. Plus durable que l'amour. Que we have a comparison, mademoiselle. Que we use for that also. Qui que we use for comparison also. It is more durable, more lasting than love. This is more lasting, plus durable than love, l'amour. Is it clear to you? Tell me yes or no. Is it clear to you? Yes, sir. So ये देखो ये चीजें ना आपका writing portion improve करेगी अगर आप इसको read on करोगे. You'll come to know like what the sentence, the you know phrases they have to say. The lien, this is a bond. Qui est souvent plus durable que l'amour. This is more oftenly more lasting than love. Par exemple, if there's a debate going on for l'amitié, you can say, c'est quoi? L'ami, c'est pas comme des chaussures. Et on les classe pas dans des catégories. L'amitié, c'est un lien qui est souvent plus durable que l'amour. Is it clear to you? Clear, mademoiselle? Yes, sir. On ne peut pas définir. We cannot define. On ne peut pas. Just give me 1 minute, sorry. You can continue, sir, just 1 minute. Okay. On ne peut pas définir. Can I start? Okay. On ne peut pas définir. Définir is my verb to define. Définir. We cannot define in a phrase or in phrase. I'm saying we cannot define in a phrase. Is it clear to you? On ne peut pas définir. On ne peut pas définir en une phrase. Is it clear to you? Yes. Clear? D'accord? इसको repeat करो please. On ne peut pas définir en On ne peut pas définir en une phrase. Is it clear to you? Set article. इसको repeat करो please. इसको repeat करो, which is very important. On ne peut pas définir. On ne peut pas définir en une phrase. On ne peut pas définir I cannot explain in a phrase. Is it clear to you? Yes, Clear, mademoiselle? अब देखो मैंने इसमें क्या किया है, इसको आपको प्रैक्टिस करना हो. मैं आपको कुछ कीवर्ड्स देता हूँ इसमें. कीवर्ड्स क्या हमारे? C'est le copain. Say this is the friend, boyfriend. Say these are my keywords, right? C'est le copain. C'est le copain, this is the boyfriend. Okay. Que j'appelle pour sortir, that I call. Que j'appelle is to call. That I call. Pour sortir, to go out. Pour sortir. Sortir, we have done sortir verb to go out. Pour sortir. Have you done sortir verb, mademoiselle?
Monsieur, sortir is my verb to go out. Have you done with this? Tell me. No, sir. Okay. So basically, mademoiselle, sortir, partir. Partir is my verb to leave. These are my verb. Sortir is to go out. Partir is to leave. And these are my être family verb in terms of passé composé. Because sortir is to go out using my leg. Partir is to leave using my leg. Sortir, partir. Is it clear to you, mademoiselle? Yes, sir. I'm saying c'est le copain. This is the friend that I call. Que j'appelle. Que j'appelle pour sortir, to go out. अपने फ्रेंड्स को फोन करते हो बाहर जाने के लिए. Pour sortir is to go out. Is it clear to you, mademoiselle? Tell me yes or no. Yes, sir. Is it clear to you? Ouais. Sorti, parti. J'ai parti. I left. Now, après moi, let's go for the conjugation of sortir. What is sortir present tense? Fataфट. Je sors. This is my present tense of sortir. Je. Tu sors. Tu sors. Elle Il, sort. elle sort. Sort नहीं है, sort. You silent. Nous sortons. Nous Répétez après moi. sortons. Nous sortons. Vous sortez. Vous sortez. Vous sortez. Is it clear to you? Oui. Il, elle Yes. sort. Il, elle sort. Is it clear to you? Yeah. Clear? Now, for example, we have the verb of partir. To partir. Clear? So, the Yes. past of sortir is sorti. The past of sortir is sorti. Sorti. S-O-R-T-I, sorti. Is it clear to you? So, the past of sortir is sorti. Is it clear? Yes, So, sortir is my être family verb. So what I will do? Je suis sorti. Is it? If you're a girl, you can add e at the end. If you're a girl, then I went out. Je suis sorti. Tu es sorti. Il, elle, est sorti. If you're a girl, L, we have e at the end. Clear? Is it clear to you? Yes, sir. Yeah. Nous sommes sortis. Nous sommes sortis. We plural, that we will insert s because that's a plural. Clear? Then we have vous êtes sorti. Is it clear to you? And Yeah. elles sont sortis. Is it clear to you? Because now il we have a plural s, l we have a plural female es. Is it clear to you? Tell me yes or no. Yeah. Yes, sir. Now, what is the lamp parfait of sortir? Tell me. Sortons. Sortons will take ons conjugation and will remove ons. We left with sort. So je sortais. Is it clear to you? Yes, sir. Sortait. Is it clear to you? Tell me yes and no. Il, elle sortait. Is it clear to you? Why? Right. Nous sortions. Sorting. Is it clear to you? Vous sortiez. Is it clear to you? Yes, sir. Why? Il, elle sortait. Mademoiselle. Clear? Is it clear to you? Yes, sir. Yes. Now, what would be the conditional? I would leave. तो je आप क्या लगा दोगे? RR लगा दोगे बस यहाँ पे. Yes, Yeah. yes. Sorter. Sorter. Yeah, yes. Sorti. To sorter. Sortir. Tu पहले sorter. आई आएगा. क्योंकि हम यहाँ से नहीं लेंगे ना, हम तो खाली यहाँ पे आर लगाएंगे, लेकिन हम वर्ब से लेंगे फिर ये पूरा सोर्तीर पूरा लेंगे और एआईएस लगा देंगे. क्लियर? ओके. Yeah. क्यू सोर्तीरे. Okay. Il sortire. Yes. Sortire. SORTI. G-I-R-A-I-T.
Nous sortirions. Is it clear? Sortirions. Yes. Nous sortirions. Vous sortirez. Clear? Vous Sortirez. Is it clear to you? Clear? Yeah. And sorti. Sorte. Sortiren. R-A-I-E-N. Sortirez. Is it clear to you? Yes, sir. So this is the conjugation basically. We have verb partir, simple. Partir is my verb to leave. So repete après moi. Je pars. S-O-R-S. Je pars. Tu pars. Elle part. Claire. Nous partons. Nous partons. Vous partez. Vous partez. Elle part. Elle part. Is it clear to you? Oui. The passive composite of partir is P-A-R-T-I. Clear? So आप बोलोगे je suis parti, tu es parti, c'est clair. Être conjugation लगाओगे आप. Je suis parti कर लोगे आप? Tell me yes or no. Mademoiselle et monsieur, can you do like that? Tell me. Yes, sir. Yes. Only we have to use être conjugation because partir is my être conjugation and I have to insert formula as in parti. So that is je suis parti, tu es parti, je suis parti, I left, tu es parti, you left, il est parti. Is it clear to you? We left. Clear? Nous sommes partis, vous êtes partis, and elles sont partis. Is it clear to you? Tell me yes or no. Tell yes. Me. अब लैम्प पार्टी क्या होगा? ONS हटाओगे, AIS लगा दोगे और कंडीशन क्या होगा? RAS लगा दोगे, वर्ब के साथ लगाओगे, पार्टी वर्ब उठाओगे and AIS. Yes. Clear? Is it clear to you? Yeah. Yes. So this is the term basically. Clear? Now, अब देखो, you come to know a lot of techniques in terms of friendship. You come to know, like, you know, the vocabularies and your conversation. And now I want you to try yourself. What you will try yourself? I'll give some keywords over here. L'amitié. Répétez après moi encore. L'amitié. Bolo, l'amitié. L'amitié. C'est une relation. Bolo, c'est une. Bolo, इसको पूरा practice. C'est une relation. बोलो कि ए बासे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे आपका लेवल ड्रामेटिकली अप जाएगा. Which is based. This is a relation which is based. L'amitié, c'est une relation qui est basée sur la confiance. It is only based upon trust. मैं बोल रहा हूँ आपको, I'm saying, je vous dis, l'amitié, friendship, c'est une relation qui est basée sur la confiance. Is only the thing which is based upon the friendship. Is it clear to you? C'est un lien durable. C'est une relation qui est basée sur la confiance. C'est un lien. This is a lasting bond. Long lasting bond. C'est un lien durable. Is it clear to you? Long lasting bond. C'est un lien durable. Is it clear to you? समझ आ रहा है आपको? C'est quand. This is when. C'est quand on s'entend bien. On s'entend bien. Répétez après moi. S'entend. S'entend bien. C'est quand. This is when we heard very best thing. C'est quand. This is when. Répétez après moi. C'est quand. This is when. On s'entend bien. We get well along with it. S'entendre. Mademoiselle, we have verb entendre. Entendre. Répétez après moi. Entendre. Entendre. Entendre, we have verb to hear. Entendre. Hear. Mademoiselle, entendre. New verb you have.
अंतंत्र। अब ये आर्यनिक वर्ब है क्लैर। Yes, sir. यस आर्यनिक से कॉन्जुगेट करोगे तो आप क्या बोलोगे? आर्यनिक वर्ब का फॉर्मूला क्या है? टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आर्यनिक वर्ब? S Yes. एस ई एस Is it? J'entends, j'entends, tu entends, il, elle, entend, nous अंतों entendons, vous entendez, ils, elles entendent. Is it clear to you? Yes, sir. वे Now, I'm saying s'entend bien. It means we listen a lot, we listen well. Is it clear to you? Is it clear to you? Clear, Yes. mademoiselle? Why? We on s'entend bien, we can say to come along well, listen along well, well listen. C'est clair. D'accord? D'accord. Now, I'm saying, c'est quelqu'un, c'est Quelqu'un. quelqu'un, someone, Welcome. c'est quelqu'un quelqu'un, C'est quelqu'un. this someone, une personne, répétez après moi, Une personne une personne qui est dans nos contacts, qui qui est, qui est, qui qui est est dans le dans contact. qui est dans No nos contact. अच्छा एक सेकंड नोट करना प्लीज.
Okay, so sorry. Okay. So c'est quelqu'un, répétez après moi. This is someone. Répétez après moi. C'est quelqu'un. Une personne. Répétez après moi. Une personne. Une personne. Une personne. C'est quelqu'un. This is someone. Okay. C'est quelqu'un. Une personne qui est dans nos contacts. Qui est dans nos which is in our contacts. C'est quelqu'un. This is someone. Une personne. Une personne. A person qui est dans nos contacts. Dans nos contacts. A person which is in our contact. Is it clear to you? Is it clear to you? Yes, Mademoiselle, repeat. मैं आपको कुछ vocabularies दे रहा हूँ. देखो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आज के सेशन में आपने खुद अपने आइडियाज मुझे लिख के भेजने हैं. सेशन का आइडियाज नहीं लिख के भेजने हैं. योर आइडियाज जो आप vocab देख रहे हो कैसे आप लगाओगे. Now we have les personnes. बोलो parler. Répétez après moi. Parler. Parler. Des relations. Des relations. Des relations amicales. Amicales. Parler des relations amicales. Speak very, amical relationship. Amical, friendly. Amical. Parler des relations. Répétez après moi. Parler des relations amicales. Amicales. Les personnes, deux personnes. Les personnes. Les personnes, the person. Is it clear to you? Les personnes, the person. Clear? Un contact. Un contact. Un contact. Contact. Un contact. Une connaissance. Une connaissance. A knowledge. Une connaissance. A knowledge. Un copain. बोलो आप. Un copain. Un copain. Un copain. Une copine. Une copine. Copine. Girlfriend. Un vrai ami. Un vrai real friend. Un vrai ami, a real friend. Ami. Is it clear? Ami. Yes. Une confidant. Une confidant. Confidant. Un confidant. Une confidant we have for female. Un confidant we have for masculine. Is it clear to you? Clear? Now, la relation. Répétez après moi. Se sentir bien. Répétez après moi. Se sentir. Se sentir is the verb to feel. Se sentir. Se sentir bien. Very Bien. feel well. Bien. Feel well avec quelqu'un. Sometimes लगता है कि आपको कोई फ्रेंड आपके साथ बहुत अच्छा आप टाइम स्पेंड करते हो तो you feel well. So se sentir bien avec quelqu'un. Is it clear to you? So these are some ideas I'm giving to you. Se sentir bien avec quelqu'un. Claire. Être la confiance. Répétez après moi. La confiance. Is it clear to you? La confiance. Avoir confiance. Répétez après moi. Avoir confiance. Avoir confiance, to have very confident. Confiance. Avoir confiance. La confiance. Is it clear to you? La complicité. Répétez après moi. La complicité. La complicité is the complicated. La complicité. Être complice. बोलो आप. La complicité. Répétez après moi. La complicité. Répétez après moi s'il vous plaît. La complicité. Is it clear to you? Oui. Être complice. इसको यूज करो इन वर्ब को. Être complice. Être complice. Confier.
Confier quelque chose, confier quelque chose. Confier quelque chose. Confier quelque chose, être complice. Répétez Quelque après moi. chose. Être Complet. Être complices. Complicit. Être complice. Is it clear to you? Complice. Être complice. Être complice. Confier quelque chose. Confier Confier quelque chose. Confier quelque chose. Claire. Être complice. Confier quelque Complice. chose. Confier quelque chose. It means être complice, to be complice, to be achieved. Être complice, to be complice. Okay. Confier quelque chose. Confier quelque chose. Very important. Confier. Confier is something like to tell something, to entrust. Confier, to trust something. Confier, to trust. Confier is to trust. Quelque chose. To trust something. The friends, you trust something. Is it clear to you? The friends, you trust something. Is it clear to you? Faire une confidence. Répétez après moi. Faire une confidence. It means confidence. to make a trust. Confident. To make and trust. Say Claire. Make a confidence. Is it clear to you? Is it clear to you? Yes, sir. Wait. Confidence. So these are the terms you can get. Confier, confidence, c'est clair. D'accord? Okay? C'est clair, confier, entrust, confier. Okay, now. अच्छा, अब आपको मैं, I want to give you one task. Now you have a lot of vocabularies. देखो ये task करना है आपको. You have to do. You have to submit your task. L'amitié पे, in friendship पे, you have a lot of terms now. Write 150 words in l'amitié. Can you write? Because now you have a lot of words. Can you write it? L'amitié. You can use your ideas. You can have some lines, whatever I explained to you. L'alliance durable, l'amitié, l'alliance durable, l'amitié être confiance, to be based, l'amitié basée sur la confiance. The friendship based upon the trust. Is it clear to you? Have you done with this? L'amitié basée sur la confiance. Have you done with this? Tell me. L'amitié, no. हाँ किया हमने. Check करना. We have done with this. L'amitié basée sur la confiance. हमने किया ना, mademoiselle किया हमने. C'est une relation. हमने अभी किया, just अभी आपको थोड़ा सा पैटर्न, आप वीडियो को देखना. Qui est basé, which is based. Yes, sir, we have done. Right, qui est basé sur la confiance, which is based upon the trust. सुनो अब आप एक चीज, ये बहुत ही important सेशन है आज का. Le cours aujourd'hui, le cours est très important. Maintenant, il est obligatoire. बोलो, il est बोलो ना language को. Il est obligatoire. Il est obligatoire. It means it is mandate. बोलो il faut que. बोलो il faut. बोलो il faut. Il faut. It is must that. ये it is must that. ये देखना आपको, ये सेशन मल्टीपल टाइम देखना है और आपको l'amitié पे अभी कुछ चीजें मुझे क्रिएट करके भेजो. वेदर आप बोलो कि l'amitié est basée sur la confiance, l'amitié est bien pour notre vie, it is very good for our life. Okay, l'ami toujours crée les choses. Okay, बोलो crée l'ami. बोलो l'ami toujours. Friends toujours. Crée les choses. Crée les choses. Crée the things. Crée les choses bien. Crée les choses bonheur. Il crée les choses bonheur. L'ami toujours.
Lami toujours crée. Lami toujours crée. Friend always create happiness. Lami toujours crée bonheur. Crée les choses bonheur. Bonheur is happiness. Bonheur is happiness. Bonheur. Crée is to create. Crée. Is it clear to you? Lami toujours crée les choses bonheur. Lami toujours crée les choses bonheur. Is it clear to you? एक बार read on करो please. Lami toujours crée les choses bonheur. Lami toujours crée les choses bonheur. Les obligations. C'est une relation qui est il est obligatoire. Il faut pas Lami toujours crée Il y a des amis. Il y a des amis qui Il y a des amis à qui toxic. À qui toxic. They are friends to whom toxic. Okay, à qui toxic. A. Repeat after me. A and il. Il crée. Il crée les choses and they create the things very badly. Il crée les choses malheureux. बोलो malheureux. Malheureux is unfortunate, bad. It creates things very bad. Les choses malheureux de notre vie. Is it clear to you? Tell me yes or no. My team, is it clear to you? Yes, sir. Right. तो अब आपको लग रहा है कि अगर आप इस पे प्रॉपर एक फोकस करोगे इस वीडियो पे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, कुछ लेवल मेंटेन होगा आपका. टेल मी यस और नो. Yes. Right. Now what is this? Over here you have to work hard. Vous devez travailler dur. Okay? Si vous voulez améliorer votre niveau, I'm saying vous voulez, répétez après moi. Vous voulez améliorer. Améliorer is to improve. Améliorer is to improve. Améliorer. Si vous voulez améliorer votre niveau, your level. Si vous voulez améliorer votre niveau, your level, votre niveau, votre level, vous devez travailler dur. Vous devez, you have to. क्या have to? Vous devez, the verb, tell me. Yes, sir. Vous devez travailler. You have to work hard. Vous devez travailler dur. Is it clear to you, mademoiselle? Travailler dur. सेशन हैवी तो नहीं हो रहा आपके लिए? सर अभी लग रहा है. सर मुझे तो लग रहा है बहुत है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है ये आज वाला. कोई बात नहीं. अब एक काम करो, सुनो, बिल्कुल ध्यान सुनना. अगर इफ यू नीड, मेरी बात को समझो आप. टुडे इज व्हाट? यस, टुडे इज ट्यूसडे. मैं क्या सोच रहा था, जो मैं सोच रहा हूँ अभी के लिए, कि अगर आपको सेशन देखो क्या क्या आपको प्रैक्टिस भी चाहिए. मैं क्या सोच रहा था कि अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो और आपको कल का ऑफ चाहिए, क्योंकि मैं सोचता कि मंडे ट्यूसडे आपको स्टडी कराऊं और मंडे उस वैसे बोलूं कि जो आपका पेंडिंग है उसको कंप्लीट करो, पहले आप उसको प्रैक्टिस करो. क्योंकि मान लो अगर आपको टाइम नहीं मिल पाया इसका, तो ये बच्चे ब्लैंक है, मान रहे हो, ये ब्लैंक है और हमारा आज के सारे एफर्ट जीरो हो जाएंगे और मुझे लगेगा कि मैंने बच्चों को करा दिया है और आपको नहीं पता होगा. क्लियर? मैं क्या सोच रहा था कि मंडे ट्यूसडे हम आपके साथ, मैं आपके साथ करूं, मैं लूं आपको दूं कि आप खुद करो प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो, निकालो अपने डाउट्स. फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में आपके साथ काम करूं एंड संडे यू हैव ऑफ. डू यू वांट टू डू लाइक दैट? टेल मी. या दैट विल बी नाइस. क्योंकि मैं आपको डेली सेशन पे ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कराने लगा हूं, क्योंकि अब आ रहा है हैवी सेशन. तो वर्ब्स, इंग्लिश में आपको वर्ब्स पता है, बट इंग्लिश में वर्ब्स पता है, वर्ब्स
बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वर्ब्स आपको बोलना नहीं सिखाती हैं। आई अंडरस्टैंड कि वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट, हमने लिखा है क्रे क्रे इल क्रे। क्रे पता है क्या? क्रिएट। मेरी वर्ब है क्रे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है क्रे। बोलो क्रे। क्रे इज टू क्रिएट, क्रे इज टू क्रिएट, क्रे बोलो क्रे। क्रे इज टू क्रिएट, बोलो क्रे 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 बोलो क्रे क्रे क्रिएट। और जब मैं कॉन्जुगेट करता हूँ क्रे को ना, तो कॉन्जुगेशन क्या है? ज क्रे। आई विल राइट इट डाउन। सो एक मैसेज डाल देना ग्रुप में बच्चों, कोई भी आप में से कोई भी एक, ठीक है, कि je crée, tu crées, il crée, nous, चलो मैं इसे मैं डाल दूंगा, nous, oh shit, what is this going on? Okay, बोलो आप crée, je crée, I create, ये बोलना है, tu crées, il crée, it create the things, nous créons, vous créez, and il crée. Is it clear? Is it clear to you, my team? Clear? So team, इसको आपको practice करना है. Is it clear to you? Yes, sir. Okay. I understand session is something like थोड़ा सा heavy है, लेकिन हमें करना है बच्चे session. क्रे पूरी वर्ब है ये क्रे, ठीक है? तो अब आप बताओ मुझे क्या करना है फिर। इसका मैं वीडियो तो आपसे अभी शेयर करता हूँ, मुझे बताओ कि कल का क्या करना है फिर। कल का लेना है आपने, ऐसे करना है आपने जैसे मैं कह रहा हूँ आपको। यस सर। ठीक है सर, क्योंकि इसको करने के लिए भी टाइम चाहिए, वीडियो 2-3 बार तो ऐसे देखना पड़ेगा, समझ नहीं मतलब अच्छे से तभी आएगा। नहीं होगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि मंडे ट्यूसडे विल वर्क वेरी हार्ड ऑन द कैंपेन। वैसे को यू वर्क हार्ड इन योर होम, यू हैव योर रिकॉर्डिंग, चेक एवरीथिंग, सेंड मी मैसेज फटाफट जो नहीं समझ आ रहा है। फिर थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे विल वर्क एंड संडे यू हैव टाइम टू प्रैक्टिस। नहीं तो ऐसे ना आपका ओवरलैप नहीं हो पाएगी चीजें फिर आपकी। क्लियर? ओके ठीक है, चलो मैं एक मैसेज ग्रुप में पास करूंगा कि एज डिस्कस्ड, क्लियर, और उस पर आप मुझे एक्नॉलेज डाल देना, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है? क्लियर? ओके ठीक है, इसको बस प्रैक्टिस करना, इससे बहुत, मुझे अपनी वॉइस को नहीं सबमिट करना। अच्छा एक काम करो, फ्रेंडशिप पे कुछ लिख पाओगे कल के बाद? कल पूरा प्रैक्टिस करना, कल के बाद कुछ लिख पाओगे फ्रेंडशिप पे प्रैक्टिस करने के बाद? ट्राई करना। ठीक है सर, इस वीडियो के बाद, हाँ जी, वीडियो देख के उसके बाद अगर कुछ जो भी समझ आएगा फिर उस पे जितना हो सकता है फिर लिख देंगे। ठीक है, ट्राई करना, लिखने की तो कोशिश करो। मैं अलग अलग टॉपिक्स करवाऊंगा अब आपको। क्लियर? ओके। जिससे आपको वोकैब मिले, आपको कॉन्जुगेट, जैसे मैं करूंगा, इट क्रिएट द थिंग्स, इल क्रे ले शोस द थिंग्स, ठीक है? इट इज बेस्ड अपॉन, बस से वो देखना, पूरा वीडियो एक एक लाइन देखनी है, एक एक लाइन लिखनी है। इज इट क्लियर टू यू? ओके चलो मैं फिर आपसे मिलता हूँ अब थर्सडे। क्लियर? यस सर। ओके ऑलराइट, प्रैक्टिस करना प्लीज यार। ओके ठीक है।